Hello everyone, good afternoon and welcome to today's session. How are you? Hello, good afternoon and welcome to today's session. How are you? So, today I'm here for, as you can see the title, Class 9th English, A Legend of Northland, Part-1. So, this is for especially for class 9 students. So this is basically for class 9. Well, others who wants to learn this poem, um, to know about what is there in this poem can also be a part of it. Hi Gantash, how are you? Welcome. Good afternoon. So today we are going to no, do this poem. Okay, this is really a very nice poem. Actually, it seems like we will get the message. Okay, though it will not seem like that it's a real one, but still this poem is going to give us a message. So first of all, whosoever is here, hi, good afternoon, and welcome to today's session. So I hope you all know about me, and you can see what I'm going to teach you from the title, that is A Legend of Northland Part 1, and it is for class 9 students. Okay, so let me tell you what is there. I'm jolly fine, Gantaj. Good to know that you are fine too. So let me tell you about myself first of all. So hi, I'm your English educator, Pavneet Kaur. I have had 7 years of experience of teaching English. I'm specialized in teaching students of different levels. I joined an academy because I'm looking for more challenging role where I can put my education, my experience and skills to help students to achieve their goals. My my main motive is to give knowledge and gain knowledge. And I'm here with the same motive, with the same energy, and to help my dear students. So as an academy says, let's crack it. So I, Pavneet Kaur, your English educator, is also asking you that are you ready to crack English with me? Okay. So my referral code, I hope you know about it. It's PAVNETKAUR. You can use this code to avail 10% instant discount on your Plus subscription. Be a Plus subscriber as soon as possible. We educators are waiting to welcome you on Unacademy Plus. Hi Shravan, how are you? Welcome. So, as I told you, my dear students, that this particular poem is for class 9 and it's really a very nice poem. Hi Praveen. Sure, no problem. I'm going to use both the language, bilingual, that will be English and Hindi both. Okay, so don't worry. So, class 9 literature, and the book name is your BEEHIVE. So, this particular poem is from BEEHIVE book, and the poem name is The Legend of Northland by Pavneet Kaur. Okay, so this is the name of the poet, and my dear student, it is very necessary to remember the name of the poet because it plays a very important role. Because whenever there will be an extract based question, you would be asked like few lines will be there, and you would be asked that what is the name of the poem and the poet. So you have to write down over there, or you have to tick. Okay, so now it's you don't have to write, you just have to choose an option. This is NCERT book. This is from NCERT book, CBSE board. Okay, this is from NCERT book. I hope you are you use NCERT book only, right? So let us start this poem without wasting time, because this is a very long poem. Okay, but it is easy one, and I am here to make it more easy and interesting learning for you, my dear students. Okay, that's great, Shravan. That's great. So I'm going to make this poem very easy for you so that you understand it in an easy words. Okay. So introduction of the poem. Let us see first of all that what is there in this particular poem. What is it about? So let me tell you. Actually, this poem is a ballad. Do you know what is the meaning of ballad? क्या आपको पता है ballad का मतलब क्या होता है?
डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेट? क्या आप लोगों को पता है बैलेट का मतलब क्या होता है? ये एक पोयम बैलेट है, बैलेट, बैलेट। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी ऑल्सो साइड बाय साइड। ओके सेजल वर्मा। सो बैलेट क्या होता है, क्या किसी को पता है? बैलेट इज एक्चुअली अ स्टोरी, एक स्टोरी जिसको हमने स्टेंजास में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हर एक स्टेंजा, जो पैराग्राफ जो हम कहते हैं पोयम का, हर एक स्टेंजा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एंड इस स्टोरी के अंदर ये भी एक स्टोरी है कि होता क्या है। आपको लगेगा आप स्टोरी पढ़ रहे हो, दो इट इज एक्चुअली बैलेट वो होता है जो कि एक स्टोरी होती है दैट इज रिटन इन एन स्टेंजा वाइज इन अ पोएम वर्क। ओके, सो हियर देयर आर 16 स्टेंजास एंड ऑल द स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स। हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स है। टेल मी टाइम ऑफ 10th का टाइमिंग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 1 PM। Days are Monday, Wednesday, Friday 1 PM. Monday, Wednesday and Friday 1 PM. Okay, are you in 10th? Praveen? Okay, Guntash. Okay, so the Legend of Northland, actually this particular poem, The Legend of Northland, is a ballad. Okay, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया ये एक ballad है, fine. And a ballad is a poem narrating a story in short stanzas. And ballad is such a kind of poem which tells a story in short stanzas. And in the poem, all the stanzas comprises of 4 lines. So मैंने कहा जैसे हर एक stanza में 4 lines होती हैं. Another day is like T square for the 9. Tuesday and Thursday for class 9, and Monday, Wednesday, Friday for class 10, and weekends off. Okay, and weekends off. Okay, so in total there are 16 stanzas in this poem, and these stanzas will tell us a story. So we are going to learn a story, and it is very nice story. Okay, and this is a kind of a ballad or obviously a folk culture. You know what is folk culture means? Of any particular area, and which has been transformed from one generation to the other. Okay, so ballad are a part of a folk culture or a popular culture and are passed on orally from one generation to another next. So orally हम एक generation से दूसरी generation को ये story बताते हैं. Ballad वो एक kind की story होती है, ठीक है. Folk culture is a story of any area and is known as a ballad. Folk culture comprises of traditional stories which are passed on from one generation to the next generation. Folk culture जो है वो basically एक traditional stories होती है जो कि pass होती है from one generation to the next generation, एक generation से दूसरी generation पे. So this story is of Northland area. ये जो particular story है ये एक Northland area की है, the area which is near to the नॉर्थ पोल. वो एरिया जो कि नियर है नॉर्थ पोल के. अगर नॉर्थ पोल के पास है तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे क्या होता होगा. बहुत ज़्यादा ठंड होती है, राइट. सन रेज कम पहुँचती है. सो दिस स्टोरी इज द बेस्ट वन and you are going to enjoy and you will learn a lesson too, my dear students. So this exact place is not specified, but Northland means the area in the northernmost part of the earth that is near the North Pole. So बच्चों यहाँ पे okay राघव, okay, all the best. Yes श्रवण, nice. So students यहाँ पे ये Northland की है. Basically अगर हम बात करते हैं so कोई एरिया स्पेसिफाइड नहीं किया है पोएट ने कि कौन सा एरिया है. बस उसने ये बताया है कि ये पोएम नॉर्थलैंड की है, मतलब जो एरिया है वहाँ पे वो नॉर्थलैंड है, ठीक है. दैट मीन्स दी नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लाइक कैनेडा, एंड यू कैन टेक दीज स्टेट्स, दीज सिटीज. ओके, सो ये सब आप ले सकते हैं. एंड विच इज़ द नियर टू द नॉर्थ पोल. फाइन.
So this area is like the northernmost part of the earth. And what does the legend means? It means any historical person, one which is very old and has been passed on from one generation to the generation. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हुआ हो, वो उस टाइप की ये स्टोरी है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? So let us see the explanation. Now I am starting this poem particularly. हम इस poem को start कर रहे हैं and I am going to explain you every stanza, every word, every line in detail. So if you have any sort of problem, my dear students, just feel free to ask your doubts. Don't miss all your doubts over here. Don't make this a dustbin. Please chill and you can ask me anything, whatever you want to ask. Okay, so let's carry on. So stanza 1 comes over here. Away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So I'm going to explain you in a very easy way over here. Then we'll go through the explanation of this particular poem, this particular stanza. Okay, so away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through. So the poet focus here, हमें यहाँ पे poet बता रहा है कि ये Northland की है जो बहुत ही दूर है. Away in the Northland, Northland के अंदर जो northern part of your earth, जहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ये, ओके, नियर बाय टू द आर्टिक सर्कल, ओके, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, वहाँ पे जो दिन का टाइम है, आवर्स ऑफ द डे, जो दिन का टाइम है वो बहुत कम है. बहुत कम कैसे होते हैं? मतलब जो डेज का जो टाइम है वो बहुत, जो दिन है वो बहुत छोटे हैं. क्यों छोटे हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँचती है. That is only for the few hours. That's why the hours of the day are few. दिन का टाइम जो है, दिन बहुत छोटे होते हैं यहाँ पे. And the nights are so long in winter. और जो नाइट का टाइम है, विंटर्स के अंदर स्पेशली बहुत लंबी लंबी रातें होती है. That they cannot sleep them through. Now who is they over here? They are the people, those who are living in the Northland. The people, those who are living in the Northland. Okay, so the people of Northland, fine. So that they cannot sleep them through. कि जो इंसान है वहाँ के, जो लोग हैं वहाँ के, वो सोते हैं, ठीक है, रात को, बट जब वो उठते हैं तब भी वहाँ पे अंधेरा होता है. This is just because कि वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँचती है. Is it clear? If it's clear, please write down yes. Now I am going to explain you in detail. So this was the basic one कि यहाँ पे पोएट ने हमें बताया है कि वहाँ पे होता क्या है, ये किस स्टोरी, कहाँ की स्टोरी है, क्या एरिया है. सो ये नॉर्थलैंड की है जहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं, नाइट्स बहुत लंबी होती है विंटर्स के अंदर, कि वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से उस नाइट में नहीं सो पाते हैं. बिकॉज नाइट्स आर वेरी वेरी लॉन्ग, कि वो सो के उठ भी जाते हैं तब भी उनको अंधेरा दिखता है. हाय जगदीश प्रसाद, हाउ आर यू? आर यू त्रिवेंद्र? ओके, सो let us see the explanation. In the region around the North Pole, Northland, the duration of the day is very less because its position is such that the sun rays reach for a less time. And when this area is experiencing the winter season, the duration of the area of the night is very very long and the daytime hours are very very less. जैसे कि मैंने आपको समझाया. So I guess it right, Dhirvendra? Hats off to me and I shall pat on my shoulder actually. In line 4, they का जो आपको मैंने बताया are the people who live in this region. And the poet says that the duration of the night time is so long that the people cannot sleep them through. For the entire day, they can't sleep for the entire night. Okay, if they go to bed, take a few hours of sleep and then they wake up. But it's still
night time, that time also. He wants to emphasize on the fact that the duration of the night is very, 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 very long. Is it clear? All of you, if it's clear, type yes. In the chat box you can write yes. And I don't know why. I think what the students love me. That's why मेरा सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले मुझे डाउन दे के गए हैं, डिसलाइक करके गए हैं इस सेशन को. क्या कह सकते हैं इसे? यह सेशन देख तो लिया करो, फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. सेशन से पहले ही डिसलाइक था. आई डोंट नो. ओके, सो जिसको भी समझ आ रहा है बहुत अच्छी तरह वो लाइक दे सकता है, लाइक आइकन को प्रेस कर सकते हैं. एंड यस, you can share with your friends also. Okay, so let us see the second stanza. So where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes. Okay, so where they harness the swift reindeer. Harness means to tie. Okay, and the sledges means, मैं आपको दिखाती हूँ एक वीडियो. Just see. So this is the picture. This is all sledges and they are harnessing, like they are tying the reindeers. This is basically the Christmas time, right? So ये use होता है. So जब भी snow होती है बच्चों, so कौन सा vehicle use होता है? You can't drive a car on the snow or something like that, right? So that time the sledges are used to Santa Claus wale, right? So the sledges are used at that time. So here also the sledges, to harness the reindeer. So means harness here means to tie the reindeer, the swift reindeer to the sledges. कि reindeer को sledges से बांधना है, ठीक है? So when it snows, so where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. कि वहाँ के लोग क्या करते हैं? Reindeers को sledges से बांधते हैं. So that this is the vehicle which is generally used when it snows. Okay. And the children looks like bears cub in their funny furry cloth. और जो children हैं वो कैसे लगते हैं? भालू के बच्चों की तरह. क्यों? Because इतनी ठंड होती है कि वो अपने funny और furry से cloths पहन लेते हैं and they look like bears cub. कि वो कैसे लगते हैं? bear की cub की तरह. ठीक है? Is it clear? In their funny furry cloths. So वो जैसे बच्चे वो पहन लेते हैं फरी फरी से क्लॉथ, तो वो बहुत फनी से लगते हैं एंड दे लुक लाइक बेयर्स का, भालू के बच्चों की तरह. So the Northland region experiences severe cold. So that you know that it's severe cold. बहुत ज़्यादा ठंड होती है. It is a snowy area. The reindeer is the animal which is found in the polar region, and the people tie the reindeer to the sledges, and the reindeer pulls these sledges. He adds that the children looks like young ones of a bear because they wear funny looking clothes made of fur, which is like the furry skin of a bear. Okay, is it clear? If yes, then type yes. Third stanza. They tell them a curious story. I do not believe it is true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Okay, they. Who is they? They are the people, the elder people who lives there. Elder people of Northland. And them are the children, okay, living in Northland. Okay, so they tell them a curious story. So the people over there, the parents of the children, they tell them a curious story, a strange story. I don't believe it's true. Poet कहता है मैं नहीं सोचता कि वो सच है. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. And यहाँ पे आगे poet कहते हैं कि अगर मैं आपको ये story बताता हूँ तो आप एक lesson learn कर सकते हो अगर मैं आपको story बताऊँ तो. Okay, but poet यहाँ कह रहे हैं that I don't believe that it is true. So the elder people, just as I told you in the starting, that this is a folk culture which is being passed orally from one generation to the another one. So in this same way, the elder people of the Northland, they tell their children a very curious story.
and which the author doesn't believe that it is true. वो author नहीं believe, जो यहाँ का poet है वो believe नहीं करता है कि वो सच है, but still हम एक lesson learn कर सकते हैं उस story से, अगर हमें ये story सुनाई जाए तो. Okay. So in line 1, they refers to the parents or the elders, and them refers to the children or the younger generation. Okay. The elders of the Northland region tells a strange and interesting story to the younger generation. The poet says that he doesn't think that the story is true, but if he tells the story to the reader, maybe the reader could learn a lesson from it, and the story gives us very, very important message. Is it clear? Let us see. Stanza number 4. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Okay, so what happened? क्या story है? यहाँ से start होती है. So poet कहते हैं कि once there was a good Saint Peter. Saint Peter here basically बच्चों मतलब है the follower of Jesus Christ. Okay, follower of Jesus Christ, like जो Jesus Christ के बारे में लोगों को बताए, aware करे. So when the good Saint Peter lived in the world below, hi Khan, how are you, welcome. So जब वो यहाँ पे रहते थे, नीचे रहते थे, मतलब अर्थ पे रहते थे, and walked about it preaching as he did, you know. और क्या करते थे, इधर उधर सबको preaching means giving the lessons, giving the lectures about Saint Peter, about Jesus Christ, कि उनके बारे में प्रचार कर रहे हैं, उनके बारे में उनकी टीचिंग्स, उनकी लेसन्स दूसरों को बता रहे हैं, सब लोगों को बता रहे होते थे. जैसे हम लोग अपने एरियाज में भी बहुत बार देखते हैं. जैसे नाउ वी आर नॉट एबल टू, हम नहीं देख पा रहे हैं, बट हाँ पहले ऐसा होता था ना कि हमें कोई ना कोई बताने आता था किसी के बारे में, थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल दैट, कोई ना कोई बताता था. सो now what happened over here is in the same way, जो ये कहते हैं कि एक सेंट पीटर थे जो कि फॉलोवर ऑफ जीसस थे, वो हमें ये मैसेजेस देते थे. ओके, so let us see the stories about the Saint Peter. When the Saint Peter used to live in the world and went around giving religious lectures to the people just like all saints, then this incident, something happened. Now what was the incident? We are going to learn. Okay, so हमने आज ऑलमोस्ट 4 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए हैं, स्टेंजास कंप्लीट कर लिए हैं. सबसे पहले बताइए क्या आपको ये 4 स्टेंजास क्लियर हो गए? If yes, then in the chat box you can type yes. Okay, you can type. I'm just seeing. Stanza number 5. He came to the door of a cottage and traveling round the earth, where a little woman was baking cakes and baking them on the earth. Okay, so now what happened over here is he came to the door of a cottage, और वो ऐसे ही घूमते घूमते एक कॉटेज के डोर तक पहुंचते हैं. कॉटेज आई होप यू नो, झोपड़ी जैसी, ठीक है. इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, जब वो सबको प्रीचिंग देते देते एक कॉटेज की तरफ पहुंचते हैं, जहाँ पे एक लिटिल सी वुमेन थी, मतलब लिटिल शॉर्ट हाइटेड थी, एंड शी वॉज एक्चुअली मेकिंग केक्स. वो क्या कर रही थी? केक्स बना रही थी. ओके, एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ. अर्थ मीन्स फायर प्लेस वेयर यू डू कुकिंग. जैसे कि हमारे पास अब लाइक हम जब केक वेक बेक करते हैं, केक्स, पिज्ज़ाज और ये सब बेक करते हैं, नाउ वी हैव माइक्रोवेव्स, ओवन्स एंड ऑल दैट. बट दैट टाइम it were not all there. Okay, it used to be of mud, okay, of all that. So baking them on the earth, it is a fireplace which you do cooking. Okay, it's something like that. आपने देखी होगी, जिसे भट्टी सा कहा जाता है, ठीक है, तंदूर भट्टी सा कहा जाता है. सो वहाँ पे ये कॉटेज में पहुँचते हैं, जहाँ पे कि एक लिटिल वुमेन होती है और वो बेक कर रही होती है. क्या? केक बेक करती है. कहाँ पे? वो अपने फायर प्लेस के अंदर. ओके, सो लेट अस सी क्या वो होता है. सी देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे केक बेक कर रही होती है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फायर प्लेस. हाय तमन्ना, हाउ आर यू, वेलकम. So this is a kind of a fireplace, अर्थ जिसे कहा जाता है.
Okay, so when Saint Peter was moving around the world giving religious lectures to the people, he reached the door of a cottage where a small woman was making cakes. She was baking the cakes in the fireplace, and this is what the fireplace. This is what the fireplace. Is it clear? Is it clear? Okay, next stanza देखते हैं. Sixth stanza आता है. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked from her store of cakes to give him a single one. And being faint with fasting, so वो जो सेंट पीटर है वो फास्ट कर रहे थे, फास्ट रखा हुआ था उन्होंने. Okay, and being faint with fasting, faint means he was feeling very weak because वो फास्ट कर रहे थे and बहुत ज़्यादा वीक थे, हंग्री थे एक्चुअली, कुछ नहीं खाया था. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. क्यों ऐसा हो रहा था? बिकॉज ऑलमोस्ट डे ओवर होने वाला था, मतलब ये शाम का टाइम होगा. ठीक है, तो ये क्या हो रहा था? ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, ही वॉज वेरी वेरी फीलिंग वेरी वीक. ओके, हाउ आर यू मैम, एट व्हाट टाइम इज यू? आर यू टॉकिंग अबाउट द प्लस, तमन्ना? आई एम जॉली फाइन बाय द वे. Are you talking about plus or are you talking about YouTube hours only? Are you talking about YouTube or are you talking about the plus? Which one, plus or YouTube? Okay, so the day was over. Okay, the day was almost over. Plus 6:30 p.m. 6:30 p.m. So the day was over, and he was feeling very weak, hungry as he was doing a fast. सो सेंट पीटर यहाँ पे वो जो लिटिल वुमेन है उससे बोलते हैं अपने केक, मतलब जो स्टोर है, तो उसमें से मुझे एक केक दे दो. ओके, यस, एवरी डे था मना, ऑलमोस्ट एवरी डे. सो ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि अपने स्टोर में से प्लीज़ मुझे एक सिंगल सा केक दे दीजिए. बिकॉज ही वॉज जस्ट फीलिंग वेरी हंग्री एंड ही वॉज फीलिंग वेरी वीक. And we can say he was feeling very weak. Actually, he was very weak and he was fainting. उनको चक्कर आ रहे थे because वो fast कर रहे. Hi ध्रुव दीक्षित, how are you? पहचाना? अब नहीं पहचाना. Einstein, ध्रुव, Einstein, the genius. Okay, so this is in the sixth stanza. Let me tell you in detail. So as Saint Peter had not eaten anything the entire day. Why? Because he was fasting. Okay, he was very hungry and was feeling very weak. So he went to this woman who was baking cakes and he asked for one cake out of many cakes that she had baked. So I'm right, Dhruv, I recognize you. Wow. Okay, so I hope ये समझ आ गया होगा कि उन्होंने एक केक मांगा था बिकॉज ही वॉज वेरी फीलिंग वेरी वीक एंड हंग्री बिकॉज ही वॉज फास्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग. ओके, सो नेक्स्ट स्टैंजा, द सेवेंथ वन. वाओ, वी कंप्लीटेड 6. वाओ, वेल डन. द सेवेंथ वन. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. Now what she did, when the Saint Peter, उन्होंने उनसे पूछा, मांगा एक्चुअली केक, तो वो क्या करती है, एकदम छोटा सा केक बनाती है, एकदम छोटा सा. बट जैसे ही वो बेकिंग के लिए रखती है फायर प्लेस के अंदर, वो देखती हैं और उनको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा केक है कि हम किसी को दे दें. ग्रीडी वुमेन, राइट, शी इज अ ग्रीडी वन, कि छोटा सा केक बनाया, ग्रीड. ठीक है, देने के लिए, जब देने लगे, उसको बेकिंग के लिए रखा, जब वो बेक होने लगा तो उसको लगता है कि वो बहुत ही बड़ा केक है और ये इतना बड़ा केक किसी को क्यों दिया जाए, कैसे दिया जाए, वो भी फ्री में, राइट. सो क्या होता है देखते हैं. तो द वुमेन वाज वेरी सेल्फिश. ग्रीडी नहीं, सेल्फिश हुई एक्चुअली. शी डिड नॉट गिव केक फ्रॉम हर स्टोर. अपने स्टोर से एक भी केक नहीं दिया. उसने क्या किया, स्पेशली एक केक बनाया जो कि नॉर्मल साइज से छोटा था केक. ओके, शी स्टार्टेड मेकिंग अ वेरी स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर. शी डिड नॉट वांट टू शेयर हर थिंग्स, बट व्हेन शी पुट द केक फॉर बेकिंग, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट दैट दिस केक वाज टू बिग टू बी गिवन टू समवन. सो इतनी सेल्फिश थी कि अपने स्टोर से तो केक दिया नहीं,
एक नॉर्मल केक जो होता है उससे छोटा सा डो बनाया और उसको बेकिंग के लिए रखा। अब बेकिंग के लिए रखा, पहले ही छोटा बनाया है, फिर भी उसको वो केक बहुत ही बड़ा दिखता है। So this woman is very 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 selfish that she was not ready to share her things, to share her cake with this hungry Saint Peter, who was a follower of Jesus Christ, who was fasting from the morning, and the day was almost over. Okay, so this woman did all this thing with this Saint Peter. Now let us see what happens. So we'll see on, wow, it got on the right time, over at the right time. So we'll see on Thursday. So stay tuned, stay connected, and you know my YouTube hours, special classes time, Pathshala class 9, 10, target NTSC, and chit chatting with Pavneet Kaur. Okay, so I hope you all have enjoyed. So don't forget to like, share, and subscribe the bell icon. So, and you can also follow me on Unacademy Learning app by managing your goal, foundation and NTSC, and searching out my name, that is Pavneet Kaur. You can follow me. Okay, so it's time to say goodbye. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay home.